Hey everyone, this is Shri and welcome to Asman Box. तो आज हमारे साथ है Asus की तरफ से आने वाला Nvidia का GTX 1650 Super. So let's dig in. We have got a GPU from Amazon.in, so let's get it out from the box. Until I get this thing out, make sure to subscribe to my channel and press the bell icon to get notified when I release a new video. Okay, this is the box जिसमें हमारा पावरफुल GTX 1650 Super पैक्ड है. गेटिंग अराउंड द बॉक्स हमें कुछ फीचर्स के हाइलाइट्स देखने को मिल जाते हैं. So without wasting time, let's get straight with the unboxing. Breaking off the seal and opening up the box, we find a protective sheet जो हमारे GPU को कवर करती है. The GPU is wrapped up into the anti-static bag. तो चलिए इसे साइड में रखते हैं और बढ़ते हैं लोअर सेक्शन की तरफ. तो here we find the instruction manual and a thank you card, and that's it. So talking about the specs, तो इसमें है 4GB of GDDR6 graphics memory with the base clock frequency of 1530 MHz or boost clock frequency in overclocking mode is 1800 MHz and in the gaming mode it is 1770 MHz. और इसमें है 1280 CUDA cores, PCI Express 3.0 interface, dual fan cooler और space grade lubricant that helps to deliver the quieter operation. इसमें Nvidia Ansel का भी सपोर्ट है जिससे गेमिंग करते वक्त हम स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन 360 डिग्रीज एंड HDR. अब चलते हैं कूलिंग सेक्शन की तरफ. तो इट हैज गॉट द डायरेक्ट CU2 जिसमें द कॉपर हीट पाइप्स मेक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द डाई जो हेल्प करता है कूलिंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने में. देन गेटिंग टुवर्ड्स द पोर्ट्स ऑफ द GPU, तो हमें 3 पोर्ट्स मिलते हैं जिसमें से पहला है द डिस्प्ले पोर्ट, द नेक्स्ट वन इज द HDMI पोर्ट and the last one is the DVI port. It has got a protective backplate जो prevent करता है PCB flex और trace damage से. Now talking about the pricing, तो इस ग्राफिक कार्ड की प्राइस रेंज करती है from 15K to 17K. So if you are interested in buying the GPU, the link for it along with its other models is given below in the description. So go check it out. Overall, ये ग्राफिक कार्ड रीजनेबल प्राइस में बेटर परफॉर्मेंस देता है. इट इज़ अ पैकेज ऑफ हाई परफॉर्मेंस, गुड लुक्स एंड बेटर ड्यूरेबिलिटी. ये ग्राफिक कार्ड 1080p गेमिंग एट हाई सेटिंग्स और 4K वीडियो एडिटिंग के लिए बेस्ट है. इट reduces रेंडरिंग टाइम while एडिटिंग. इन गेमिंग सेक्शन ये 1080p रेजोल्यूशन में मोस्ट ऑफ द ओपन वर्ल्ड्स गेम चला सकता है और हाई सेटिंग्स पर 60 FPS तक का FPS काउंट देता है. Okay, that's it for today guys. Hope you like the video. If you do so, hit the like button and make sure to subscribe to my channel and press the bell icon to get notified when I release a new video. If you have any better suggestions, comment down below, and till then, stay techy.